Hi everyone. So in this video we will talk about Infor interview questions. ठीक है. So first of all, if you are preparing for Infor, 2-3 things which is very important, which you need to keep in mind. The interview will be the balance of practical questions, technical questions, behavior questions. Okay. So make sure कि आप सारे डोमेन्स को कवर करके जा रहे हो, because technical and behavior both questions are important. ठीक है. So दोनों को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. स्टार्टिंग विद द टेक्निकल साइड ऑफ हाउस. सबसे पहले इसको कवर करते हैं. तो देखो, Infor एक ऐसी कंपनी है which provides you a very good package, decent package. Okay. So now talking about Infor, you need to prepare good on your technical side. First of all, they will grind you on your CV, ठीक है, और उसके बाद they will ask you questions regarding the technical domain which you have mentioned in your resume. Okay. So first of all, the first important thing is your project. So project is the topic which is one of the favorite topic for Infor. So make sure you are covering all the aspects of your project, also the breakdown of the project. First, the introduction about the project, what you have done, the tech stack which you have used, the breakdown of the project, like into the smaller parts, also the databases. The database part is very important in the project because they generally ask questions around databases in the project, like why you have used, can you break down, can you draw the ER schema for this project, okay, something like that. So make sure you are covering the backend and the data part very important, conscientiously, okay. And अनदर चीज़ के मतलब प्रोजेक्ट आपका ये चीज़ें हो गई. उसके बाद ऑल्सो द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द टेक स्टैक. सपोज इफ यू आर यूजिंग Node.js. ओके. सो एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग Node.js, डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग Node.js, किन एप्लीकेशन में वी यूज द Node.js, किन एप्लीकेशन में वी डू नॉट यूज द Node.js. ओके. सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रिपेयर करके जानी पड़ेगी. सो मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर प्रिपेयरिंग योर प्रोजेक्ट वेरी गुड. ओके. सेकंड थिंग इज द CS फंडामेंटल्स. सो इन द CS फंडामेंटल्स मेजरली some important topics are OOPS, object oriented programming. So 3 types of questions in OOPS. First, the definition. Second, example. Third is the real entity scenario. Okay. So suppose if I am mentioning what is data hiding. Okay. So data hiding, you can give the definition. Now the example of data hiding, या फिर syntax of the data hiding. So you can say if we declare the variables in the private section, private access specifier, then all the data members are within the class and we are performing the data hiding. Okay. But now talking about the real world scenario, you can like talk about, so suppose in the bank system, bank cannot show the password of the customer outside the class. Okay. Suppose if we are creating a bank class, then we can create the password inside the private access specifier. Okay. So something like that. सो आपका डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल हो गया, एंड द रियल टाइम एप्लीकेशन. ओके. सो नाउ मूविंग अहेड, ऊप्स आपका हो गया. ऊप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर यू कवर ऊप्स. ओके. थर्ड वन इज DBMS. सो DBMS एंड SQL इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो in the DBMS you do not need to require like for covering all the topics in the DBMS, but SQL and around topics of SQL. ठीक है. So first one is your SQL में आपकी queries आ गई, all the topics around SQL, like कीज हो गई आपकी क्योंकि वो SQL से रिलेट करती है, डेटाबेस का स्कीमा हो गया, ER डायग्राम्स हो गए, रिलेशन एंटिटीज हो गई, एंड एवरीथिंग विच कनेक्ट्स टू SQL इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो SQL एंड क्वेश्चन अराउंड SQL इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. लाइक लैंग्वेजेस लाइक DDL, DML, TCL. ओके. ऑल दीज थिंग्स. ओके. सो कवर ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू SQL, एसिड प्रॉपर्टीज, समथिंग लाइक दैट. ओके. सो SQL ट्रांजेक्शन में अगर कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, सो वो चीज आपको यहां पर जरूर कवर करनी है फ्रॉम SQL. ऑल्सो दे कैन आस्क यू टू राइट क्वेरीज इन SQL, सो मेक श्योर यू प्रिपेयर क्वेरीज वेरी वेल. ठीक है. Also, the third important topic is programming. So make sure that you know programming very well. So if you suppose you should be good with any one programming language. Suppose if you are good with Java, so they might ask you to write down some code or pseudo code around Java for a question. ठीक है. The question difficulty will be not much hard, बट ईजी मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. सो मेक श्योर कि एटलीस्ट आपने 100 to 150 क्वेश्चंस तो कर रखे हो प्रोग्रामिंग के ऊपर, बिकॉज बाई चांस इफ दे आस्क यू क्वेश्चन, वैसे मैं आपको बताऊं तो चांसेस थोड़े कम रहते हैं, दे विल आस्क यू क्वेश्चन अराउंड कोडिंग. ओके. Majorly they focus on theory part, like OOPS they will ask you questions around your projects, they will go deep down into the project, they will ask you questions around SQL, DBMS projects, OOPS. okay. but थोड़ा सा कम चांस रहता है कि यहाँ पर दे विल बी आस्किंग यू द क्वेश्चन अराउंड कोडिंग, बट प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दे माइट आस्क यू क्वेश्चंस अराउंड कोडिंग. ओके. सो मेक श्योर कि आप अपना बेसिक कोडिंग और अपने 100 to 150 क्वेश्चंस यहाँ पर प्रिपेयर करके जा रहे हो. ठीक है. ये तो आपका ये सारी चीज़ें हो गई. बाकी
if you have mentioned anything in your resume, that can be asked. So any kind of skill, any certification, any work which you have mentioned, any projects, any specific technology which you have used. Suppose if you are using machine learning in something in your project or something like that, they can ask you question around it. Okay, so make sure whatever you have mentioned in your CV, you are very well prepared on it. Okay, another important part is the behavior section. So behavior section is basically the combination of situational question and HR questions. Okay, so situational questions like how will you tackle the conflicts, how will you handle this, how will you handle this situation, these types of questions falls in the category of situational questions. And HR question, what is your strength and weakness, how do you see yourself in upcoming next 5 years, so something like that. So आपको ये सारे questions भी prepare करने हैं. And जब आप ये चीज़ें को prepare कर लोगे, overall आप Infor के लिए prepared हो जाओगे. इसके लिए उतना ज़्यादा हार्ड डी से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. इनफोर विल नॉट आस्क यू मतलब वेरी हार्ड डी से क्वेश्चंस अराउंड ग्राफ्स एंड ऑल, मतलब चांसेस आर वेरी लेस. ओके, सो बेसिकली इन द कोडिंग सेक्शन प्रिपेयर अराउंड इजी मीडियम लेवल क्वेश्चंस. SQL, DBMS projects, OOPS are very, very, very important. So make sure you prepare very good around it. Also, your CV is very important, whatever you have mentioned. And combination of situational and behavior question. These will be enough for your preparation of Infor, and all the best for the interviews.